Hey, what's up everyone? You are watching Icon Design and welcome back to my channel. So this is my second video on Canva app tutorial. In the last video मैंने आपको बताया कि आप टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके कैसे एक ब्यूटीफुल टेम्पलेट बना सकते हैं खुद का और खुद का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं यूजिंग कैनवा टेम्पलेट्स। बट इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे स्क्रैच से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके वाइट बैकग्राउंड लेके आप कैसे खुद का एक न्यू डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होगा कैनवा को यूज़ करके एंड वाइट बैकग्राउंड लेके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन हिट करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में फ्लायर का रेजोल्यूशन ट्राई किया था इस वीडियो में भी फ्लायर का ही रेजोल्यूशन ट्राई करेंगे एंड वाइट बैकग्राउंड को रेडी करेंगे एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन में। दिस इज़ द रेजोल्यूशन। So for the background I am going to choose a simple color or else you can choose also gradients. Let's choose gradient. आप उस टाइप का कलर चूज़ कर सकते हैं जैसे आपका टेक्सचर हैप्पियर फॉर्म में है तो आप हैप्पियर कलर चूज़ कर सकते हैं लाइट ग्रीन। आई एम यूजिंग द टेक्स्ट वेलकम टू माई चैनल, दैट्स अ वेलकम। यू कैन यूज वार्म कलर्स, orangish reddish, but today I am going to do something different. I'm going to choose green color for my text. And the next thing to do is to search for different designs and elements to put on our design. To search for your designs and elements. You should always remember the concept of your design. कि आपका डिज़ाइन क्या मैसेज दे रहा है, आपके डिज़ाइन में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन के ऊपर कि उसमें टेक्स्ट कौन सा है, उसका कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसमें आप क्या मैसेज फीड करना चाहते हैं। यू शुड ऑल्सो कंसिडर द कलर ऑफ योर बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, आपके बैकग्राउंड में कोई अलग कलर जा रहा है एंड उसके साथ मैच ही नहीं कर रहे एलिमेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द कलर कॉम्बिनेशन, द कंसेप्ट, द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू पुट इन योर डिज़ाइन, these three things are the main things to put your design on next level. So here is the final background design. Elements ले लिए हैं, corner design, flowers. So that's all I am going to put in the background. Next thing to do is to put the text. What I am going to do is to choose a frame. After searching a lot, I've came up with this फ्रेम एंड इस फ्रेम में अभी मैं अपने टेक्स्ट को पुट करूँगी।
एंड डिफरेंट फॉन्ट एंड डिफरेंट कलर के साथ मैंने अपने टेक्स्ट को फ्रेम में फिट कर लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन. लास्ट, माय फेवरेट टैगलाइन. I hope you liked the video. If you did, hit the like button and do subscribe the channel. Thanks for watching.